Hi students, welcome to ePhysics. Here we shall learn concepts of physics more conveniently. I am Ghosh and this is the third lecture on electrostatics. But lecture number 1 is not available in this channel due to some reason. But it will be available shortly. Okay. So in our previous class, that means in lecture number 2, we had discussed about Coulomb's law, vector form of Coulomb's law, and we discussed units of charge. So this was a previous class, and today's class is related with Coulomb's law. Okay. So today we shall discuss about these 2 points. Number 1, this is superposition principle. Okay. With the help of this principle, we calculate the amount of force between multiple charges. Okay. With the help of this principle, we calculate the amount of electrostatic force on a particular charge particle due to n number of other charges. So we do that. And number 2, we shall discuss about a new quantity that we have seen in Coulomb's law, and this is known as the permittivity, and we denoted this quantity by epsilon. So we shall discuss about this quantity and what is relative permittivity and what is dielectric constant, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. तो चलिए हमारा आज का जो डिस्कशन उसको शुरू करते हैं. So we shall understand the concept of superposition principle with a very simple numerical example. Okay, and suppose we have to calculate the amount of force on a particular charge particle due to n number of other charges present in a certain region. Okay, so उसको हम लोग कैसे करेंगे? Because we know that with the help of Coulomb's law, we can calculate the amount of electrostatic force between the two charge particles, but one boundation is there. That is, in Coulomb's law, we can calculate the amount of force on a charge particle due to other charge. That means only one charge is present in front of the charge particle. Suppose Q1 and Q2. Q1 and Q2. Two charge particles present in this situation. So Q1 के ऊपर Q2 के लिए कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसको हम लोग Coulomb's law अप्लाई करके निकल सकते हैं. But if there are many charge particle in this region, तो हर एक चार्ज पार्टिकल Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो उसको हम लोग Coulomb's law अप्लाई करके नहीं निकल सकते. बट Coulomb's law को हम लोग यूज करके ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा उसको हम लोग प्रूव करेंगे. वेरी सिंपल कंसेप्शन. देखिए इसको हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. सो व्हाट इज आवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम? दैट इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू n number of charges. Okay, this is our example. So we have taken a Cartesian coordinate system in the free space. Okay, very simply we just understand the concept. This is the Cartesian coordinate system in the free space, and we have placed n number of charged particles in this region. Okay, so here we have placed Q1, Q2, Q3, and in general charged particle, you can say this is the representative of all other charges. So this is Qn, and the position of these charged particles with respect to origin is R1. Q1 का जो position है R1, R2, R3 and Rn respectively. These are the position vectors of Q1, Q2, Q3 and Q1. It identifies the position of the charges. Okay. Now, one by one,
we shall calculate the amount of electrostatic force on Q1 due to Q2, due to Q3, due to Q4, due to Q5, due to Q6, and more general way, that is due to Qn. So first we shall do that. That means the force on Q1 due to Q2. Okay. So by applying the Coulomb's law, we can easily calculate that force. Okay. But here we apply the Coulomb's law in vector notation. Okay. So in our previous class we have discussed detail about that. So if you want to watch that video, you can go our previous class. This is also available in this channel. So F12, this represents the electrostatic force on Q1 due to Q2. This is equals to 1 by 4 pi epsilon naught R1. This is the position of Q1 with respect to Q2. Okay. And R12 is the unit vector which represents the direction of the force on Q1 due to Q2. Now we shall calculate the electrostatic force on Q1 due to Q3. Force on Q1 due to Q3. This is F13 is equals to by the same way we are applying the vector form of Coulomb's law, and similarly Q4, Q5, Q6 ऐसा करके हम लोग n तक, that means n number of particle तक उसका कितना टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हर एक पार्टिकल के लिए Q1 के ऊपर होता है, उसको हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे. इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्शन. नाउ in general charge particle, that means this is the representative of all other charges. That means force on Q1 due to Qn. Okay, so this is F1n is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Qn. These are the expression of individual force due to Q2, Q3, Q4, Q5 and Qn. These are the. Now we shall see what is the statement of superposition principle. What it states. So in a simple way, it states that हर एक चार्ज पार्टिकल के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 के ऊपर एप्लीकेबल होगा, उस फोर्स को आप क्या करोगे, वेक्टोरियली उसको जस्ट ऐड कर दीजिए, तो आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बन जाएगा. सो दिस इज नाउ द टोटल electrostatic force on Q1 will be F12 plus F13 plus 1n. This will be the total force on Q1 due to Q2, Q3 and Qn. Okay. Now इसका वैल्यू पुट कर देंगे इधर 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 plus
Okay, so these are the expression of force on Q1. Now we express this equation in summation form so that we can get an in general expression of force on Q1 due to n number of charges around P. So उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे. So F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught. हर एक इक्वेशन में आएगा. So उसको हम लोग बाहर रखते हैं. 4 pi epsilon naught. Now sum. तो इसको सम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए Q1 जो चार्ज पार्टिकल है हर एक्सप्रेशन में Q1 रहेगा क्योंकि Q1 के ऊपर हम लोग फोकस कर रहा हूँ. ओके, सो द चेंजिंग चार्ज पार्टिकल इज Q2. यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Qn. अगर Q4 रहता तो Q4, Q5 ऐसे करते करते. सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको I इक्वल्स टू 2 to n, समेशन I को 2 से n तक लेके जाएंगे. सो Q1, Qy, I का वैल्यू 2 से लेके n तक चेंज होगा. एंड R1 I, this also changes 1 I and R1 I gap. So this is the expression of total or net electrostatic force on Q1 due to the n number of charge particle present around this charge particle. Okay, so this is the final expression of electrostatic force on Q1. So by applying the superposition principle and with the help of Coulomb's law, we find out the expression of this force on charge particle Q1 due to all other charges around it. Okay, so this is our superposition principle. And one important thing, that is जब हम लोग Q1 के ऊपर Q2, Q3, Q4 हर एक चार्ज पार्टिकल के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको हम लोग निकालें. सपोज Q1 के ऊपर Q2 के लिए जब फोर्स एक्सप्रेशन हम लोग निकाले, सो इन दैट टाइम all the charges present in this region has no effect on this force. Okay, so this is an important points we have to remember. And the final statement of the superposition principle is that the force on any charge due to the number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges, and the individual forces are unaffected due to the presence of other charges on that region. So this is the statement of superposition principle. आपकी बुक में भी आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा, बट अगर आपके पास NCERT का बुक्स रहेगा तो उसमें से आप इस स्टेटमेंट को फॉलो कीजिए, बिकॉज दिस इज द बेस्ट स्टेटमेंट. ओके, सो दिस is our superposition principle, and I hope all of you have understand the concept of superposition principle very well. It's a very simple process. Very quickly I am summing up this process. That is, first we shall take a Cartesian coordinate system and we have placed n number of charge particle in this region, and the position vectors of this charge particle with respect to origin are R1, R2, R3 and Rn respectively. Now the force on Q1 due to Q2 is represented by this expression. Force on Q1 this, and force on Qn this, and the superposition principle states that is, you can say the total electrostatic force, or you can say that you can say the superposition principle states that, उसके बाद आप इसको लिखेंगे, total electrostatic force on Q1 is equals to F is equals to this, and in general expression we have represent it by this expression. हम लोग इस expression से उसको क्या किया,
meter. So this is our superposition principle. Now we shall go to our next point, that is the permittivity, relative permittivity and dielectric constant. So this is our second point, that is we shall discuss about permittivity. So in Coulomb's law we have seen this new quantity which is known as the permittivity, and you know the value of this quantity depends on the medium. So हम लोग पहले Coulomb's law से start करेंगे. So this is suppose Q1 and Q2, these are the two charged particles kept at a distance r. Okay, so इस चार्ज पार्टिकल को, दो चार्ज पार्टिकल को हम लोग फ्री स्पेस में भी रखेंगे और किसी दूसरे मीडियम में भी रखेंगे, और one by one we shall define relative permittivity and you can say it as dielectric constant. उसको हम लोग करेंगे. So SI यूनिट सिस्टम में दो चार्ज पार्टिकल का बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सपोज वैक्यूम और फ्री स्पेस में, उसका एक्सप्रेशन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन r स्क्वायर. ओके, सो वी नो दैट एक किस में, फ्री स्पेस में. नाउ किसी दूसरे मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह में एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन r स्क्वायर. दिस इज, अब CGS में F इज इक्वल्स टू वैक्यूम में Q1 Q2 अपन r स्क्वायर, एंड किसी दूसरे मीडियम में 1/k. दिस इज स्मॉल k Q1 Q2 अपन r स्क्वायर. दिस विल बी the expression of Coulomb's law in SI and CGS unit system. So in our previous class we had discussed them. Okay. Now this is equation number 1, this is equation number 2, this is 1, this is 2. Now 1 divide 2 करेंगे. So in that case FV by Fm will be epsilon by epsilon naught, which is represented by a new quantity, represented by a new term. This is epsilon r, and this is known as the relative permittivity. Okay, now CGS का जो इक्वेशन है उसको अगर हम लोग 1 divide 2 करेंगे, so FV by Fm is equals to K. This quantity K is known as the dielectric constant. Okay, this quantity is known as the dielectric constant. तो यहाँ से हम लोग relative permittivity और dielectric constant को define कर सकते हैं, but both the quantities are same. Okay, the value of both the quantities are same. In CGS system में हम लोग अप्रोच करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे, और SI system में all other quantities are measured in SI units. So in that case we called this quantity as the relative permittivity. बस और कुछ भी फर्क नहीं है दो क्वांटिटीज में, बस नाम का ही फर्क है. जैसे this is relative permittivity and this is dielectric constant. Both the quantities are unitless and dimensionless because they are the ratio of two same quantities. Okay, so this is the relative permittivity. Now we can define relative permittivity and dielectric constant. आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, आपकी किताब में भी ऐसा डेफिनेशन आपको मिल जाएगा. रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द permittivity of the free space. This is relative permittivity.
और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में क्या बोलेंगे? सो दो चार्ज पार्टिकल को, दिस इज द रेशियो बिटवीन द magnitude of the force between the two charged particle kept at a certain distance in free space to the magnitude of the force between the same two charges kept at the same distance in any other medium, that is Fb by Fn. This is called the dielectric constant, and these two expression is very important. Okay, these two expression is very important. Now we shall discuss what is the role of the quantity permittivity in Coulomb's law. So permittivity, this is the new quantity. So in our previous class we had also discussed that the free space में इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट टर्म्स, and it has a specific value, and we know that it has the value 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square per newton per meter square. This is the value of permittivity. And free space में permittivity का जो value होता है वो सबसे कम होता है. So in any other medium permittivity having the value greater than the free space. Okay, so अगर ऐसा होगा, इस सिस्टम को एक बार हम लोग सपोज फ्री स्पेस में रखेंगे और एक बार दूसरे किसी मीडियम में रखेंगे, तो फ्री स्पेस में अगर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सबसे कम होगा, इसमें सबसे कम पुट करेंगे तो Fv, that means force in vacuum, obviously greater than the force in any other medium. इसको हम लोग इस एक्सप्रेशन मिल जाएगा. My question is that why the force is decreasing when we placed the same system in any other medium? क्यों कम हो जाते हैं? So इसका जो कारण है वो अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इनिशियल स्टेज में है. अभी तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किया. हो सकता है आपको इसके बारे में नॉलेज होगा, लेकिन वी आर बाउंड इन दिस प्लेस बिकॉज वी शैल डिस्कस इन आवर लेटर क्लास दैट, बट वेरी क्विकली हम क्या करेंगे, इसका जो पिक्चर क्यों कम होता है उसको आसान भाषा में आपको बोल देते हैं. सो व्हेन वी प्लेस्ड the system in any other medium, any other medium का मतलब क्या है? इस वाटर मीडियम हो सकते हैं, किसी दूसरे गैसियस मीडियम हो सकते हैं. ओके, सो ऑल these mediums are dielectric medium. Okay, and dielectric medium का मतलब क्या होता है? Dielectric क्या होता है? So depending on the electrical conductivity, we know that matters are classified into two classes. Okay, number one is conductor and number two is insulator. So देखते हैं इसका जो आंसर कैसे मिलता है उसको हम थोड़ा देख लेंगे. चलिए, बट अभी आपके पास पिक्चर क्लियर नहीं हो सकता है, लेकिन बाद में जब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पूरा आपको खत्म हो जाएगा तब आपको इसके बारे में डिटेल कंसेप्शन मिल जाएगा. सो डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, matters are classified two classes. Number one is conductor and number two is insulator. These are the two classes. इसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं. ओके, and the insulator is known as dielectric. More simple, आप आसान भाषा में आप इसको बोल सकते हैं. इंसुलेटर क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक होता है. तो जब हम लोग क्या करेंगे, फ्री स्पेस को छोड़ के इस सिस्टम को दूसरे किसी मीडियम में रखेंगे तो क्या होगा, ये जो फोर्स का कारण क्या होता है?
हमारा आने वाला क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट फिर भी थोड़ा सा उसको कंसेप्शन दे देते हैं। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है, हर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड अपना अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ओके, सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा होगा तो दो चार्ज पार्टिकल का बीच में जो फोर्स होगा वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, लेकिन जब इस सिस्टम को हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस्ड करेंगे, सो ड्यू टू द पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होगा, उसका पोलराइजेशन होगा। तो क्या पोलराइजेशन है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बस इतना कंसेप्शन सुन लीजिए कि इसको जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक का क्या होगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। तो पोलराइजेशन होने के कारण क्या होगा, ओरिजिनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड था दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, सो उस फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्यू टू द पोलराइजेशन एक फील्ड जनरेट होगा। ओके, सो इस फील्ड, सपोज डाइलेक्ट्रिक का सपोज ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, अभी जो डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन के कारण उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, so the resultant resultant electric field will be E minus E dot। so इसमें क्या होगा, resultant electric field कम हो जाएगा। तो हम क्या बताया कि फील्ड जितना स्ट्रांग होगा फोर्स उतना स्ट्रांग होगा। so यहाँ पे क्या हो गया, फील्ड तो कम हो गया, तो इसके वजह से किसी मीडियम का जो पार्टिकल रहता है उसको प्रेजेंट होने से क्या होता है कि दो चार्ज पार्टिकल का बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वो कम हो जाता है, और इस कम के कारण एप्सिलॉन जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, कितना कम होता है। तो बाद में हम एक एक्सप्रेशन भी देखेंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई, इस एक्सप्रेशन को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे। So this is about the permittivity, relative permittivity and dielectric constant. Okay, so I think the conception about these points to discuss here is clear to you. Okay, so if you like the classes, then please share with your friends and subscribe the channel, and thank you for watching this video.